Good morning, students. Welcome to our maths class. Today we are going to start our new chapter. The chapter number is 8 and the name of the chapter is quadrilateral. So before going to start the discussion of this chapter, please I request to all of you, due to COVID, the government is declared there is some few topics it is not considered for the exams. So I name the that topic is deleted topics, correct? So which topics are deleted? So please note down. First, examples number 1 to 8, that will be not considered for the exams. Then exercise number 6.8.1, in that exercise the question number 2 to 12 are deleted, and exercise number 8.2 whole मतलब पूरी की पूरी, that is whole exercise is deleted. So these three things we will not discuss in this lecture, correct? So I hope you understand ki which topics are not considered for point of exam, correct? These three things are not including in our question paper. So start with the introduction. So the name of the chapter is quadrilateral. Now what is the meaning of quadrilateral? We will discuss. Before that quadrilateral, suppose I say that we have a 3 points. That 3 points we have. So which type of shapes you can draw with the 3 points? So about that thing, you studied many properties of the triangle related to this 3 points, correct? So how can we make a figure of triangle? So we know that we learnt in previous classes about this thing, that by joining of 3 non-collinear points. Now what do you mean by non-collinear point? It means not on the same line. Suppose ki bhai I am drawing this line, so 3 points are not considered on the same line, like 1, 2 and 3 points, like that. We cannot consider like this. Triangle can be drawn by 3 points like this. That is point 1, that is point 2 and that is point 3. This figure is known as a triangle. So we learnt about the triangle and its property in your earlier classes as well as in your previous chapter number 7. Okay, so I hope you understand, or we can say that you understood about the triangles and its property. Now student, now we are going to discuss about 4 points. Suppose we have 4 points, 1, 2, 3 and 4. So with the help of which type of figures we can obtain? So here I draw, there are 4 types of figure. You can see here on the screen, figure number 1, figure number 2, figure number 3 and figure number 4. So after seeing these figures, what we have to get? So we get that if we talk about first figure, the first figure, so all the points are collinear. You can see here, students, in the first figure all the points are collinear. Okay, I explained that what you mean by collinear. That means all points are on the same line. So you can see here in figure number 1 all points are on same line. So we can say this create line segment, correct? So if we have 4 points and all points are collinear, so we obtain the figure like line segment. Suppose ki bhai now there are 4 points, and from the 4 points 3 points are collinear and 1 point is not collinear. So which type of shape we get? So we can join them. So we get a shape like triangle. Yes or no? Yes, very good. So here I have written that if the 3 out of 4 points are collinear, What do you mean by collinear? Again I am explain
Collinear means all points on same line, and we get a figure like a triangle. And now if no 3 points out of 4 points are collinear, we obtain a closed figure with the 4 sides. See here, you can see these 4 points are non on the same line, they are in a different places. Same here, all points are not collinear but in the different places. तो this called a closed figure. ये क्या है, आपकी एक closed figure है. Here is also closed figure that have 4 sides. So by using 4 points, we can create different type of figures, and we are only discuss that type of figure and its property in this chapter. Okay students, so let's start our term that is called quadrilaterals. So जैसे हमने प्रीवियस जो भी डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि जो 4 पॉइंट्स हमारे थे, that is not in a collinear point, that create a closed figure, and the name of this closed figure is quadrilateral. Now we can write the systematic definition of quadrilateral. Quadrilateral means what? So such a figure formed by joining 4 points in order is called quadrilaterals. Correct? So I hope you understand the definition of quadrilateral. Again I am repeat, what do you mean by quadrilateral? The quadrilateral it means what? Such a figure formed by joining 4 points in order is called quadrilateral. Okay, so now understand the quadrilateral by taking one examples. So you can see here in the figure. Before the discussion of the figure, we can now understand the properties of quadrilaterals. So quadrilaterals has 4 sides, 4 angles and 4 vertex. क्या समझा हमने यहाँ पे? Quadrilateral has 4 sides, 4 figures, 4 angles and 4 vertices. Correct? So now understand this theory by taking one example. So here I draw a quadrilateral. The name of the quadrilateral is ABCD, and now we can write the name of the sides. So first is AB, second side is BC, third side is CD, and last one is DA or AD. Now 4 angles, which ones? Angle A, angle B, angle C and angle D, and 4 vertices D, A, B and C. Correct? The vertices are A, B, C, D. So now you understand what is quadrilateral and its property. It has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. I am also explaining that how to write the name of quadrilateral, name of sides, name of angles and vertices. Suppose I have another quadrilateral like this. Suppose I am taking this type of तो in exam they ask like this कि भाई write down the name of sides. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Sides. The name of the side, how can we write? Sides always write with the 2 points, joining with 2 points. तो ये रहा point P and point Q. The first name of side is PQ, then QR, third side is RS and fourth side is SP or PS. Correct? This is the name of the sides. Now vertices. तो vertices कौन से होंगे? तो that is P, Q, R and S. P, Q, R, S. Now names of angles. The name of the angle is angle P, angle Q, angle R, angle S. And symbol of angle is, this is the symbol of angle. Angle P, angle Q, angle R,
and last one is angle S. Yes or no? So now I hope you understand how can we write the name of quadrilateral and how can we write the name of sides, vertices and angle. Correct? Please keep the practice by taking another examples by making your own quadrilaterals. Correct? Chaliye. Now move on the next topic. Now next topic is, students, is there what is the angle sum property of quadrilateral. Correct? In triangle we see कि sum of all angles is equal to कितना होता है भाई 180 degree. Correct? तो in quadrilaterals there are 4 angles. Yes or no? That is angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. And now what is the sum of these 4 angles? That is 360 degree. Okay? So please keep in mind, in quadrilateral all sums of angle is 36 degree. Yes or no? तो suppose taking this example, there are कितने angles? यहाँ पे है 4 angles. तो by using angle sum property we can say angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to कितना मिलेगा आपको? Always 360 degree. Understand? This is your angle sum property. Now next topic is types of quadrilateral and its property. अब जिसे आप लोगों ने पढ़ा था types of triangle, तो there are 4 types of triangle. First, which one? Don't know. चलिए, let's revise it. Let's recall it. There are types of triangle. The first triangle is equilateral triangle. Second is isosceles triangle. Third is right angle triangle. And fourth one is skeletal triangle. Correct? तो there are the 4 types of triangle. तो वैसे ही हमारे quadrilaterals के भी type है. तो quadrilateral का total कितने types है आपके? 6 है. Which ones? The first trapezium. Second one is parallelogram. Third number is rectangle. Fourth number is square. Fifth number is rhombus. And sixth one is kite. Correct? So these are the 6 types of quadrilaterals which have 4 sides, 4 angles and 4 vertices. Correct? So let's discuss their property one by one. Okay? Then the name of the first shape is trapezium. So how looks trapezium? So you can see here in your diagram. Here I draw the diagram of trapezium, that is A, B, C, D. And what is the property? So one pair of opposite side are parallel. Correct? So in our example AB and CD, these are 2 opposite sides. This one and this one are opposite sides and always parallel to each other. And the symbol of parallel is this straight lines. Correct? ये हम लोग with the help of these 2 straight lines indicate that this AB and CD are parallel to each other. Okay? This is the property of trapezium. Okay, and students, I hope you understand the property of trapezium. Now move on the next shape. The next shape is parallelogram. Correct? So what is the definition of parallelogram? So both pair of opposite sides are parallel. देखिए यहाँ पे if I am take the example like AB CD quadrilateral, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? अपोजिट साइड एक तो बन रहा है AB, दूसरा बन रहा है क्या? CD आर पैरेलल टू ईच अदर. एंड सेकेंड वन इज AD and BC, both are opposite sides and both are parallel to each other. So we can say that ABCD is parallelogram. Correct? Now properties. First property, opposite sides are equal. Opposite side कौन सी बनेगी हमारे डायग्राम में? तो AB and CD both are equal. BC and AD both are equal. Understood? Now opposite angles are equal. Now opposite angles, which are opposite angle? If I am take angle A, तो उसका opposite यानी क्या? उसके सामने वाला, तो कौन सा बनेगा आपका? एंगल C. तो एंगल A and एंगल C are same. If I am taking एंगल B, तो उसका opposite क्या होगा भाई? एंगल D. That एंगल D is same. मतलब एंगल B और एंगल D कैसे है? सेम है. Now last one is diagonals are bisect to each other. Now diagonals are bisect to each other मतलब क्या? diagonals कैसे बनते हैं? How can we draw the diagonals? तो diagonal is formed by taking 2 opposite points.
These are the two opposite points. So BD is a diagonal and AC is diagonal, and both are bisector at point O. Correct? So this is the property of parallelogram. Understand? Now next shape is rectangle. So rectangle have what? Opposite side are parallel and equal. मतलब if I take AB, तो उसकी ऑपोजिट क्या बनेगी भाई? CD. बोथ आर इक्वल. इफ आई एम टेकिंग साइड AD, तो उसका ऑपोजिट क्या बनेगा आपका भाई? दिस BC. एंड बोथ आर इक्वल. अंडरस्टैंड? द डायगोनल्स. नाउ अगेन आया डायगोनल. तो डायगोनल की डेफिनेशन क्या थी? ज्वाइनिंग ऑफ टू ऑपोजिट पॉइंट, दैट इज BD, एंड डायगोनल इज सेकेंड वन इज AC. तो BD एंड AC आर डायगोनल्स. क्या है भाई वो? डायगोनल्स. एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर. मतलब क्या कर रहे हैं वो? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंड लास्ट, आप सब जानते हो रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑल एंगल आर 90 डिग्री. करेक्ट? अंडरस्टैंड? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, that is square. Square. So how can we define the square? The opposite sides are parallel and all sides are equal. मतलब अगर हम I am taking if the side AB, तो उसका opposite क्या होगा? CD. and BC, तो उसका opposite क्या होगा? AD. क्या होंगे? Parallel to each other. तो if I want to write in the symbolic form, तो how can we write? So AB parallel to CD and BC parallel to AD. Correct? Yes or no? We can write this statement by using these symbols. Yes or no? Yes? Good. Now next, all angles are 90 degree. मतलब क्या होंगे? सारे angles कैसे होंगे भाई? 90 degree. Yes or no? Okay. Now next, diagonals are bisector other at right angle. तो यहाँ पे देखो बाइसेक्टर यानी क्या करना? देखो ऑपोजिट एंगल्स दे रहे हैं, सॉरी ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेंगे? डायगोनल्स. एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्टर एट दिस राइट एंगल. सो इफ यू सी केयरफुली, देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकेंड ट्राइंगल, ये थर्ड ट्राइंगल एंड ये फोर्थ ट्राइंगल बन रहे हैं. यस और नो? तो स्क्वायर के अंदर क्या होते हैं? 4 राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट होते हैं. कौन से होते हैं जनरेट भाई? 4 राइट एंगल ट्राइंगल. ओके. और जब भी क्या है राइट एंगल की बात आए तो आप एक अनदर और थियोरी सीखे हुए हो जिसका नाम क्या है? पाइथागोरस थियरम. ठीक है? तो पाइथागोरस थियरम कब आएगा? जब राइट एंगल होंगे तब. तो हम स्क्वायर के अंदर पाइथागोरस थियरम का यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पाइथागोरस का भी शायद यूज़ करेंगे. ओके. तो दिस इज द ऑल द प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्क्वायर. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट शेप इज रोम्बस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम? करेक्ट. बिकॉज मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है? दोनों के दोनों शेप सेम ही दिख रहे हैं. करेक्ट. बट पैरेललोग्राम में क्या था स्टूडेंट्स? ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. बट रोम्बस में क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. मतलब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई. करेक्ट. पैरेललोग्राम में क्या था? ऑपोजिट साइड्स आर ओनली पैरेलल. बट रोम्बस के अंदर क्या इंक्लूड हो गया? एक और चीज़ इंक्लूड हो गई. ऑल साइड्स आर इक्वल. मतलब क्या होगी? सारे साइड से इक्वल होगी. तो वी कैन से AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Yes or no? Correct? So please keep in mind what is the difference between rhombus and parallelogram. There is only one difference. Parallelogram में क्या होता है? All sides are not equal, but in the rhombus all sides are equal. So there is a main difference between rhombus and parallelogram. Okay. Now second property is that opposite angles are equal. मतलब क्या होंगे? Angle D is equal to angle B. Angle A is equal to angle C. Yes or no? These are called opposite angles to each other and वो क्या होंगे? Equal होंगे. Diagonals, फिर से diagonals की बात आई तो how can we draw the diagonals? By joining opposite vertices and that are bisect at
राइट एंगल, करेक्ट। ओके, इसमें भी क्या होगा, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट हुआ तो फिर से क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो रोम्बस एंड स्क्वायर, करेक्ट, उसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रेक्टेंगल में भी क्या था, हमारे 4 एंगल्स कैसे थे, राइट एंगल ट्राइंगल थे, करेक्ट। तो हम लोग रेक्टेंगल के अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। नाउ लास्ट टाइप ऑफ our kite quadrilateral, that is name of this quadrilateral is kite। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे शेप, इट्स लुक लाइक अवर काइट। ठीक है, आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी जस्ट हमारी जनवरी में क्या गई थी, मकर संक्रांति गई थी, तब आप लोगों ने सबने काइट्स क्या किए होंगे, फ्लाई किए होंगे। ठीक है, तो आप सबको बता वो शेप याद होगा, ठीक है। तो दिस शेप इज काइट। तो काइट के अंदर क्या है, तो 2 pairs ऑफ एडजेसेंट साइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट साइड, मतलब पास पास वाली। ठीक है, पास पास मतलब वो जो खाने वाली आती है वो नहीं, पास पास मतलब नियरेस्ट साइड, करेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं CD की बात करूँ, ठीक है ना, तो CD की नियरेस्ट साइड क्या होगी आपकी, BC बनेगी, और ये दोनों कैसी होगी आपकी, इक्वल, करेक्ट। एंड दूसरी अगर बात करूँ मैं ये साइड AD की, करेक्ट, तो उसकी नियरेस्ट साइड क्या होगी आपकी, AB। तो ये दोनों कैसी होगी, एक दूसरे के साथ इक्वल होगी, करेक्ट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, 1 pair ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या तो सेम होगा, और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। दोनों ऑपोजिट एंगल एक साथ कभी सेम नहीं होंगे, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, डायगोनल्स इज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। जो डायगोनल यानी डायगोनल की डेफिनेशन फिर से आ गई, मतलब क्या करना है आपको, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना है, और वो क्या हो रहे हैं भाई, राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से क्या होंगे, 4 राइट एंगल जनरेट होंगे, और क्या होगा, हम लोग कर सकते हैं क्या भाई, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आज का लेक्चर हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर बिकॉज मतलब इफ़ आई टीच अनदर थियोरीज तो दिस विल बी मैशअप इन योर माइंड। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कि प्लीज़ 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 go through this lecture again and write all the properties and all the shapes in your notebooks and understand the properties of the quadrilateral, so it will be easy to solve the examples and small type of question it will be asked in your exams, so you can easily understand and solve that questions, correct। सो इन योर होमवर्क में क्या रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू राइट ऑल दिस प्रॉपर्टीज इन योर नोटबुक, ड्रॉ द डायग्राम्स, करेक्ट, एंड लर्न इट। ओके, थैंक यू सो मच।